सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स फ्रॉम 23 फरवरी टू 1 मार्च। ओके, सो 50 एमसीक्यूज रहेंगे, इन्हें ध्यान से देखिएगा बच्चों। सो फर्स्ट वन इज, वेयर इज नेशनल आरोग्य फेयर 2026 being organized? Shagaon. Okay, so C option will be the right one. Second one, Prasad scheme was launched by which ministry? B option will be the right one, Ministry of Tourism. Okay, after that, who has become the most capped player in women's international cricket? The right answer will be which option? B, Harmanpreet Kaur. After that, if we talk about who recently launched the Yuvika 2026 program, option C will be the right one, ISRO. Okay, after that, recently who has topped the medal tally in Winter Olympics 2026? Norway ne. Okay, after that, if we talk about sixth one, which Indian state hosted the World Ocean Science Congress 2026? The right answer will be bachcho option C, Goa. After that, India's first dedicated quantum and AI university campus will be set up in which state? The right answer will be bachcho Andhra Pradesh. D option will be the right one. आफ्टर दैट एट्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइस्ट प्लेस इन इंडिया? ड्राइस्ट प्लेस कौन सा है सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर बच्चों? दैट इज जैसलमेर. ओके, बी ऑप्शन विल बी द राइट वन. नाइन्थ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इनॉग्रेट पूसा कृषि विज्ञान मेला इन विच प्लेस? ठीक है, द राइट आंसर विल बी बच्चों न्यू दिल्ली. ओके, 10th वन, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ CEO ऑफ द नीति आयोग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये. नीति आयोग के CEO को किसको चुना गया बच्चों? निधि छिब्बर. ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. 11th, in which state has RBI established its second new high security data center? This is also very important question. The right answer will be bachcho option D, Odisha. 12th, who has been recently designated as a global champion for road safety by the UN? The right answer will be bachcho Sachin Tendulkar. C option will be the right one. Which state's chief minister Mohan Yadav announced the plan to extend Bhavantar Yojana to mustard farmers? The right answer will be bachcho Madhya Pradesh. Option D will be the right one. The Union Cabinet approved the proposal to change the official name of the state of Kerala to what? ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने किसके प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया है जिसके अंडर कहा गया कि केरला के नाम को बदलकर क्या कर दिया जाए बच्चों? सी ऑप्शन इज राइट वन, केरलम. ओके, after that, 15th, the National Arogya Fair 2026 was held in Shagaon, which is located in. Now Shagaon कहाँ पर है बच्चों? Shagaon is located in Maharashtra. Okay. After that, which country has announced the construction of the tallest building in Australia? कौन सी country ने recently announce करा है कि they will build a tallest building in Australia? The right answer will be बच्चों USA. Okay, after that, 17th, which Indian film won the Best Children's and Family Film Award at 79th British Academy Award 2026? The right answer will be bachcho option D, Boong. Okay. 18th, in 2026, which leader became the most followed world leader on the Instagram after crossing 100 million followers? ऐसे कौन से लीडर हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर जिन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर 100 जो मिलियन फॉलोअर्स हैं वो क्रॉस कर दिए हैं? ठीक है, द राइट आंसर विल बी बच्चों नरेंद्र मोदी. ऑप्शन बी. ओके, आफ्टर दैट, हु इनॉग्रेटेड एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2026 इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश? द राइट आंसर विल बी JP Nadda. ऑप्शन सी. ओके, who was Jitendra Mehra, who passed away at the age of 86? He passed away at the age of 86 and he was businessman. Okay. 21st, World Protein Day celebrated every year on which day? तो World Protein Day हमें अब देखने को मिलता है बच्चों 27th Feb को. A program promoting Namaste scheme, तो एक program that promotes the Namaste scheme has been organized in which place? तो कहाँ पर ये organize करने जा रहे हैं Namaste scheme? तो पीलीभीत के अंदर बच्चों ये organize होने जा रहा है. ऑप्शन डी. नेक्स्ट 23, हु लॉन्च द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0? कौन लॉन्च करने जा रहा है? निर्मला सीतारमन. ओके. CM Shri schools are proposed to be launched in which state? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो CM Shri schools are proposed to be launched in हरियाणा. ऑप्शन डी विल बी द राइट वन. विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड द CM302 मिसाइल? तो कौन सी कंट्री है रिसेंटली जिन्होंने CM302 मिसाइल जो है वो डेवलप करी है? दैट इज चाइना. ओके. After that, who has won the gold medal in women's ice hockey at the Winter Olympics 2026 held in Italy? The right answer will be bachcho USA. C option. E-bike Didi scheme will be launched in which of the following states? UT, Rajasthan, Chandigarh, Uttar Pradesh, Delhi. Okay, the right answer will be बच्चों दिल्ली. दिल्ली में E-bike Didi scheme जो है वो लॉन्च होने जा रही है. Who is the author of the book Atal Bihari Vajpayee, The Eternal Statesman? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द आंसर विल बी विजय गोयल. ऑप्शन ए. ओके.
In the Delhi liquor policy case, which leader was reported to have shed tear as a court criticized the CBI? The right answer will be which option D, Arvind Kejriwal. When will the Jal Mahotsav be organized by the Ministry of Jal Shakti? तो जल महोत्सव जो है वो कब देखने को मिल रहा है बच्चों हमें? दैट इज फ्रॉम 8th March to 22 March. ओके. National Science Day 2026 is celebrated on which date? 28th February will be the right answer. When is World NGO Day observed every year? World NGO Day हमें कब देखने को मिलता है? 27 Feb बच्चे. ठीक है. राजदी उत्सव was organized at राष्ट्रपति भवन. What has the famous Mount Abu located in Rajasthan been recently named as? तो माउंट अबू जो कि राजस्थान के अंदर है उसका नाम रख दिया गया है बच्चों अबू राज. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. Which state police has launched Operation Crackdown to prevent the misuse of regional bank accounts in the cyber fraud cases? The right answer will be बच्चों option D, Telangana. Which state's Palamu Tiger Reserve has launched the Vanjeevi Didi initiative to protect wildlife? Jharkhand. Okay, Jharkhand will be the right one. Which supreme leader of Iran has died in the attack of Israel and America? तो आपको पता है ये रिसेंटली दिस इज़ अ रीसेंट न्यूज़ दैट सुप्रीम लीडर जो हैं वो ईरान के मारे गए हैं और वो कौन थे? अयातुल्ला अली खamenei. ओके. डी ऑप्शन. इंडिया हैज़ लॉन्च द फर्स्ट रिजल्ट्स बेस्ड एनवायरमेंट अवार्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन. तो इंडिया ने लॉन्च करा है बच्चों एनवायरमेंट अवार्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन. द राइट आंसर विल बी ज़ीरो प्राइज. ओके, ज़ीरो प्राइज अवार्ड. After that, which team has won the Ranji Trophy 2025 to 2026 title? तो the right answer will be Jammu and Kashmir. Where has Goonj 2026 Youth Festival held? जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रहा है हमें ये. After that, PM Narendra Modi launched a nationwide vaccination drive for 14-year-old girls against which disease? The right answer will be बच्चों HPV. इसकी full form important है Human Papilloma Virus, that is for cervical cancer. Okay, C option will be the right one. 42. When is Zero Discrimination Day observed in United Nations? The right answer will be 1 March बच्चों. India launched the Zero Prize Initiative, reward tangible reduction in which issues? The right answer will be pollution reduction. मैंने अभी आपको पीछे बताया कि Zero Prize Award जो दिया जा रहा है that is for pollution reduction. Okay. 44th, G7 2026 will held in which country? So it is held in बच्चों France. Okay. The Bhavya Bharat Bhushan Award by which organization? Isha Foundation will be the right answer. 46th, who will represent India at Tariq Rahman's oath ceremony at Bangladesh? The right answer will be option C, Om Birla. 47th, who has won the Global Teacher Prize 2026? Global Teacher Prize जो है 2026 किसको दिया गया बच्चों? रूबल नागी. ठीक है. Which country has banned WhatsApp? रशिया ने बैन कर दिया WhatsApp को. Okay. Where is India AI Impact Summit 2026 held? New Delhi. Okay. Next. The last question, who has won the title of Pro Wrestling League 2026? तो प्रो रेसलिंग लीग टाइटल जो है वो किसने जीता है बच्चों? हरियाणा थंडर, दिल्ली दंगल, मुंबई मराठी, पंजाब रॉयल्स. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, हरियाणा थंडर. तो यहाँ पर हमारे 50 MCQs हमने कवर कर लिए हैं बच्चों, जो कि 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक मैंने आपको सारे MCQs डिस्कस करवा दिए हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs रहेंगे, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.